नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और एनटीपीसी में जो 10 नए पोजीशंस आई थी असिस्टेंट ऑफिसर के लिए एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के फील्ड में, उससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारी मेरे पास है जो आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो यहाँ है वो एडवर्टीजमेंट का अगला हिस्सा है, चूज अ ड्रीम करियर एंड क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड। एनटीपीसी इज हायरिंग एग्जीक्यूटिव्स फॉर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। तो ये पूरा एडवर्टीजमेंट मैं पढ़ देती हूँ। NTPC Limited, India's largest power conglomerate, has an installed capacity of 68,961 megawatts. Commensurate with our country's growth challenges, NTPC has embarked upon an ambitious plan to attain a total installed capacity of 130 gigawatts by 2032. NTPC is looking for executives in environment management for its projects, and there are 10 posts for assistant professor environment management. Qualifications are graduate engineering degree in environment with at least 60% marks, or graduate with at least 60% marks with full-time PG degree, PG diploma, MSc or MTech in environment engineering or environment science or environment management with at least 60% marks from a recognized university or institution. The upper age limit is 30 years, you can see here, and the pay scale is 30,000 to 100 to 1,20,000. So there are vacancies, and the unreserved is 6 posts. Economically weaker sections is 1 post. Other backward classes or other backward castes is 2 posts. Scheduled caste is 1 post. Scheduled tribe is nil, and total is 10. And vacancies for PWBD, people with benchmark disabilities candidates, as per government guidelines. Vacancies for EWS, economically weaker section candidates, as per government guidelines, subject to the outcome of Honorable Supreme Court order. Identified types of disabilities, so कौन-कौन सी disabilities हैं जो यहाँ पर लागू होंगी for the post of assistant officer environment management is B, LV, D, HH, OA, OL, LC, DW, AAV, ASD, SLD, MD involving A and A to D above. तो इसकी फुल फॉर्म्स क्या होते हैं, वो जो भी इस कैटेगरी में आते हैं वो जानते होंगे या वो पता कर सकते हैं. The health एक aspect है. The candidate should have sound health before joining. Candidates will have to undergo medical examination at any of the NTPC hospitals, and the decision will be final and binding. No relaxation in health standards is allowed. Detailed medical norms are available on the website careers.ntpc.co.in. तो ये हेल्थ चेकअप होगा किसी भी कैंडिडेट का फाइनल एग्जाम के बाद और ज्वाइनिंग से पहले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका हेल्थ चेकअप होगा. जनरल कंडीशंस हैं एलिजिबिलिटी के, ओनली फॉर इंडियन नेशनल्स. All qualifications should be from universities or institutions recognized or approved in India. So हम सभी जानते हैं किसी भी recognized university का ही डिग्री या सर्टिफिकेट मान्य होता है. All computations of age qualification shall be done with respect to the last date of receipt of online application as mentioned in the advertisement. तो advertisement के जो डेडलाइन है 3 जून, उस वक्त तक आपकी जो एज होगी वो फैक्टर मैटर करेगा जो ये एज लिमिट को डिसाइड कर रहे हैं 30 years. So हम अनरिजर्व के लिए 30 है. आगे और देखते हैं. The management reserves the right to conduct online screening, shortlisting, selection test, or to raise the minimum eligibility standards as per the requirement. In case of selection test, the final selection shall be based on 85% weightage of online written test marks and 15% weightage of interview marks. So weightage written test का ज़्यादा होगा 85% और 15% होगा interview का weightage. लेकिन however, the candidate must qualify separately in online written test and interview. तो कैंडिडेट को ऑनलाइन जो रिटन टेस्ट होगा उसमें भी और इंटरव्यू में भी दोनों में पास होना पड़ेगा, और उसके बाद पास होने के बाद फिर दोनों एग्जाम्स का वेटेज अलग अलग होगा. The online written test will have 2 parts: subject knowledge test (SKT) and executive aptitude test (EAT). The candidates are required to qualify both in subjective knowledge test and executive aptitude test. तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट के भी 2 पार्ट्स होंगे, सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट और एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, और इन दोनों पार्ट्स में आपको दोनों पार्ट्स में कम से कम पासिंग मार्क्स
आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक में आपको फुल मार्क्स आ गया और दूसरे में 0 आ गया तो आप पास हो जाओगे, ऐसा नहीं, दोनों में एक पासिंग मार्क्स होता है जो आपको आना चाहिए। Candidates are required to indicate their choice of test centers at the time of online application. Online application में आप test centers का choice भर सकते हैं. NTPC reserves the right to change the test centers depending upon response feasibility. और NTPC को जैसा उपयुक्त लगेगा वो test centers को बदल ही सकती है. Where there is a vacancy identified for such category as scheduled caste, scheduled tribe, and people with benchmark disability, candidates with at least 55% marks in required qualification are eligible to apply for the post. तो ये जब SC, ST और people with benchmark disability की candidates हैं, उनको 55% marks में eligibility है. Candidates claiming to belonging to any particular category shall necessarily submit a copy of economically weaker sections, OBC, SC, ST disability certificate, as the case may be, from a competent authority where there is a vacancy identified for such category. Upper age is relaxed by 5 years for scheduled caste and scheduled tribe candidates, by 3 years for OBC, NCL candidates, by 10 years for people with benchmark disability candidates, by 5 years for candidates who had ordinarily been domiciled in the state of Jammu and Kashmir during the period of 1/1/80, मतलब 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 1989 तक जितने भी लोगों को कश्मीर में डोमिसाइल मिला था उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन 5 साल है. ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन 3 साल है. शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 5 साल है. और पीपल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन 10 साल है. ये किसी ने मुझसे सवाल पूछा था कि मैम एज रिलैक्सेशन क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिलैक्सेशन ऑफ एज टू एक्स सर्विसमैन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस. Depending upon the requirement, the company reserves the right to cancel, restrict, curtail, enlarge the number of vacancies. So company अपने हिसाब से vacancy को बढ़ा घटा भी सकती है अगर जरूरत पड़ी तो. Posting shall be at any of the stations, projects, JVs, subsidiaries of NTPC. NTPC की किसी स्टेशन या उसके subsidiary unit पे भी posting आपकी हो सकती है. All posts are transferable at the sole discretion of the management. और transfer आपका हो सकता है management के discretion पर, management की मर्जी पर. While applying for any post, the applicant should ensure that he or she fulfills the eligibility and other norms mentioned above, as on the specified dates, and that the particulars furnished are correct in all respects. In case it is detected at any stage recruitment that a candidate does not fulfill the eligibility norms, and or that she has furnished any incorrect or false information, or has suppressed any material fact, his her candidature will stand automatically cancelled. तो कोई भी धोखा धांधली अगर हुआ या किसी को लगा कि आपके का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर वो मीट नहीं हो रहा है तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा. Canvassing in any form shall disqualify the candidate. नकल नहीं करनी है. The mere fact that a candidate has submitted application against the advertisement and apparently fulfilled the criteria as prescribed in the advertisement would not bestow on him or her the right to be definitely called for test interview. अगर आपने एप्लीकेशन दिया और आप एलिजिबल भी हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए बुलाया ही जाए. Any proceedings in respect of any matter of claim or dispute arising out of this advertisement and or an application in response thereto can be instituted only in the Delhi and courts, tribunals, forums at Delhi only shall have sole and exclusive jurisdiction to try any such cause of dispute. अगर इस जॉब से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है, कोई कोर्ट केस होता है तो दिल्ली में ही करना होगा. In case any ambiguity मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है अगर, या डिस्प्यूट कुछ भी वाद विवाद होता है, arises on account of interpretation in versions other than English, the English version will prevail. तो ये जो एडवर्टीजमेंट है इसका अगर कहीं ट्रांसलेशन हिंदी और किसी भाषा में अभी आपको दिख जाता है और आपको लगता है कि इंग्लिश और हिंदी भाषा में या इंग्लिश या दूसरी भाषा में कुछ मिसमैच है, तो जो अंग्रेजी की भाषा में जो लिखा है वही ओरिजिनल है और वही सब कुछ मान्य होगा. तो आप इस एडवर्टीजमेंट को गौर से देखें. और अप्लाई कैसे करना है? इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स शुड log on to our website careers.ntpc.co.in or visit sections at www.ntpc or visit careers section at www.ntpc.co.in for applying. No other means of modes of application shall be accepted. Candidates are required to possess उनके पास होना चाहिए एक valid email ID.
NTPC will not be responsible for bouncing back of any email sent to the candidates. अगर आप गलत ईमेल आईडी भरते हैं या किसी और वजह से आपका ईमेल आप तक नहीं पहुंच पाता है तो उसमें NTPC की कोई गलती या जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी. Candidates belonging to the general economically weaker sections, OBC and NCL category are required to pay a non-refundable registration fee of rupees 300. तो उनको जनरल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और OBC NCL जो भी कैटेगरी होती है इनको एक नॉन रिफंडेबल 300 रुपए का रजिस्ट्रेशन फी लगने वाला है. द SC ST people with benchmark disability /XSM category and female candidates need not pay any registration fee. तो ये जो यहाँ पे लिखा है इसको ध्यान से देखिए, किन किन को रजिस्ट्रेशन फी भरनी है और किन किन को रजिस्ट्रेशन फी नहीं भरनी है, ये यहाँ लिखा है, इसको ध्यान से पढ़िए. पेमेंट इन ऑफलाइन मोड, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइन में डिस्कस करूंगी, पहले ऑफलाइन मोड में. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन ऑथोराइज्ड टू कलेक्ट द रजिस्ट्रेशन फी. SBI के पास अथॉरिटी है, वो रजिस्ट्रेशन फी कलेक्ट करेगा अगर आप ऑफलाइन मोड से बैंक के थ्रू जाना चाहते हैं. इन स्पेशली ओपन अकाउंट, अकाउंट का नंबर ये दिया हुआ है, ये आपको सही सही भरना है. एट कैग ब्रांच न्यू दिल्ली, कोड है इतना, ब्रांच कोड इतना है. ऑन बिहाफ ऑफ NTPC, candidate has to approach the nearby SP branch with a printout of the paying slip which is available on the application registration portal. तो जो एप्लीकेशन का पोर्टल है उसमें पेइंग स्लिप के लिए भी एक पोर्टल बना हुआ है, उसको खोलिएगा और उसमें पेइंग स्लिप आपका निकलेगा और फिर उसमें ये डिटेल भर के आपको पेमेंट करनी है SBI को. The paying slip printed from the portal should only be used for depositing the fee for the proper crediting of amount in the allocated amount. सिर्फ इस अकाउंट नंबर में भरना है. On receipt of the money, the bank will issue a unique journal number and a branch code of the bank collecting the money. और आप जब बैंक को पैसे मिल जाएंगे तो वो आपको जर्नल नंबर एक देगा जो यूनिक होगा आपके लिए, और ब्रांच कोड जो बैंक जिस बैंक का में के ब्रांच में आप पैसे जमा कर रहे हैं. This journal number and the branch code are to be filled by the candidate during the online registration. और फिर ये जर्नल नंबर और ब्रांच कोड को लेके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में फिल करेंगे. और NTPC will not be responsible in case a candidate deposits the fee in the wrong account. अगर गलत अकाउंट में आपके पैसे गए तो गलती आपकी मानी जाएगी, NTPC की नहीं. तो ये पूरा जो है, जो भी ऑफलाइन मोड में करना चाहते हैं, ये पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ें. कितना रजिस्ट्रेशन फी आपको लगना है, अगर या SC ST PWBD या XSM कैटेगरी के हैं तो कुछ नहीं लगना है, फीमेल्स को कुछ नहीं लगना है रजिस्ट्रेशन फी, अदर्स को 300 रुपए लगना है. इस अकाउंट में भरना है और कैसे भरना है मैंने आपको बताया. Payment in online mode, candidates also have the option to pay the fee online through net banking, debit card, RuPay debit cards only. So RuPay debit cards only. ये क्या होता है? सॉरी मुझे नहीं पता है, पर डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो सिर्फ यही डेबिट कार्ड चलेगा, या फिर क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, कोई भी चलेगा. The online payment option will be available on the website. वो वेबसाइट पे ही दिया गया ऑनलाइन पेमेंट, तो ये ज्यादा आसान लग रहा है. The candidate is required to make the payment before proceeding for online application. और पहले ऑनलाइन कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू मेक द पेमेंट, पहले पेमेंट करना होगा फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरी होगी. आफ्टर मेकिंग सक्सेसफुल पेमेंट, द चालान नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ पेमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड अप इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन. तो पेमेंट जब ऑनलाइन कर लेंगे तो फिर चालान नंबर, बैंक रेफरेंस नंबर और डेट ऑफ पेमेंट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी ऑनलाइन पेमेंट के रिसिप्ट में, और फिर वो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरनी होगी और तभी एप्लीकेशन आपकी ऑनलाइन जमा होगी. Fee once paid will not be refunded under any circumstance. एक बार आपके पैसे जो गए तो NTPC आपको रिफंड नहीं करेगा. Candidates are therefore requested to verify their eligibility criteria before paying the registration fee. तो अपना eligibility criteria आप पहले वेरीफाई कर लीजिए, आप एलिजिबल हैं या नहीं. अगर आप एलिजिबल हैं तभी रजिस्ट्रेशन फी भरिए, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं है, थोड़ा सा भी आगे पीछे हुआ और रजिस्ट्रेशन फी आपने भर दी तो NTPC आपको रिफंड नहीं करेगा. और ये जो भी जानकारी है ये NTPC की वेबसाइट पर है, जो और NTPC की वेबसाइट कौन सी है उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो पोजीशंस विद NTPC 10 पोस्ट असिस्टेंट ऑफिसर ये चेक कीजिए, और उसके वैकेंसीज एट NTPC 10 पोस्ट असिस्टेंट ऑफिसर एनवायरमेंट मैनेजमेंट, ये मेरा पिछला वीडियो है, उसको चेक कीजिए और उसमें पता कीजिए और उस वेबसाइट पर जाके देखिए. ये पूरा एडवर्टीजमेंट भी वहां पे मौजूद है, आप ढूंढेगा आपको मिल जाएगा. राइट हैंड साइड पे ऊपर टैब है एडवर्टीजमेंट का, वहां पे ये खुलेगा, देखिए और ठीक से ध्यान से पढ़ के और फिर एलिजिबल है या नहीं पता कीजिए और फिर ही आगे की प्रोसेस कीजिए और फिर ही पैसे भरिए. इसमें से किसी भी जानकारी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने ये जानकारी आपको पढ़ दी है.
इसका जो ट्रांसलेशन है वो आप अपने हिसाब से, समझ के हिसाब से करके अपनी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई कीजिए। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 20/5/2022, 20 मई से शुरू है और 3 जून 2022 को लास्ट डेट है। सो द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन इज 3 June 2022, which is this year. And please go on the website, where the website is. Go check my previous video, which is called Vacancies at NTPC, 10 posts, Assistant Officer Environment Management. So that video, and there you'll get where the website is, and there's the link for the website. On that website, on the right hand side, you'll see a tab called advertisement. Click that tab and you'll see all of this advertisement. Understand it, determine if you're eligible. If you're eligible, go and fill up the application and pay the application fee. I'm not responsible in any way for conveying this information to you. I'm just doing my duty because somebody asked for this information, so I'm just reading the advertisement. Okay. और उसी का फिर ये हिंदी में भी ट्रांसलेशन है, तो मैंने आपको जानकारी दे दी है। आप वेबसाइट पर जाएं, पता करें एलिजिबल है या नहीं, और अपने विवेक का इस्तेमाल करके नौकरी के लिए अप्लाई करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस जॉब।